Right, gentlemen. Yesterday we were discussing the distribution of questions in various domains of the exam, and this is a summary in front of you. Can you see this summary? Yes, sir, I can see. Okay, okay. So in this summary, you can find uh, that in strategic management we have got the weightage of strategic management is 15%, and I have calculated it from the point of view of the 170 questions you are going to be getting in your PgMP exam. So out of 170 questions, this strategic management will take a weightage of 25.5 questions, which comes out to be around 26 questions. So 26 questions are going to be from the strategic program management. For program lifecycle, we have 35 tasks and 44% of weightage. This comes out to be around 75 questions. Within these 75 questions, I have further distributed it into initiation, planning, execution, monitoring and control and closing. From initiation part, you will get 12 questions, planning 16, execution 24, controlling 17, closing 6 questions. This comes out to be total of 75 questions in the program life cycle. Benefits management, we have got about 16 questions, stakeholder management 28 questions, and governance 25 questions. I'll show you the further breakdown of each one of the tasks. We have got 72 tasks. So the distribution of these 72 tasks I'll be showing you in the next slide. Right. This is a strategic program management, and we have 11 tasks here. Okay, as I said yesterday, these tasks are the standard for program management is not exactly aligned with the initiation, planning, execution, monitoring and control and close. But still, the exam syllabus shows that the questions would be asked according to those details. Now, it is slightly difficult to find out from where these tasks relate in the standard. So what I have done is I have placed the name of the chapter title with which it relates and the number of questions expected from that topic. So the very first task, which is perform an initial program assessment by defining the program objectives, requirements and risks in order to ensure program alignment with the organizational strategic plan, objectives, priorities, vision and mission statement. Now, this element relates to organizational strategy and program alignment. This is chapter number 3, topic number 1, 3.1. So out of this 3.1, you can simply expect 3 questions. So if you can, distribute your standard accordingly heading wise, then you will see that you will get these many questions from that area. Naturally, at this stage, it might be difficult for you to catch up on this, but naturally, once we will open up and we'll start studying each and every chapter, and these headings will appear in front of you, and we will discuss them, then it will be easier for you to understand that this is the topic from which you are going to expect about 3 questions. So, this is kind of the initial feasibility or assessment, and you define what the purpose of the program is, what are the objectives, what are the basic high level requirements, high level risks, uh, and also what is the organizational strategic objective with which you are being aligned.
what are the priorities, what is the mission and the vision and the mission statement. So these are high order things which are in the task 1. Then we have task 2, and task 2 is to again establish a high level roadmap. Now we are going a step further. Previously we connected it with the strategy, we briefly defined what the program is. Now we are going to develop a roadmap with milestones and preliminary estimates. These are just preliminary estimates in order to obtain initial validation and approval from the executive sponsor. So I can very safely say that in task 1, what we have done is the assessment of the feasibility, and now we are converting it into some workable roadmap, how the things are expected to be done in this program, and we are seeking approval of the requisite authority. So this relates to 3.2 program roadmap, and you will be getting from this roadmap thing, high level roadmap with milestones and preliminary estimates, 2 questions out of it. So if you want to further break it down, you can say maybe 1 question from the milestone and 1 question from the estimate, something like that. But we can only guess. We cannot be very exact about these things. But still, if we can somehow distribute these questions like this, it would be easier for us to prepare and give emphasis to certain topics. Task number 3 is defining the high level roadmap again, but this time it is with a framework in order to set a baseline for program definition, planning and execution. Now this baseline is a larger level baseline for the whole program, but this is not just the roadmap. We are defining the framework. We are setting a baseline for our program definition, how the program is defined, planned and executed, the whole procedure. It's just like you create a project management plan. So here we are, starting to do the program management plan, although we don't call it program management plan at this stage, but this is something like that. We are creating the framework for that. So this is again 2 questions, and this also relates to 3.2 program roadmap. Task 4 is defining the program mission. You remember in the very first task, we did talk about the vision and mission statement. So this somehow relates with that vision and mission statement. So here what we are doing is defining the program mission statement by evaluating the stakeholders' concerns and expectations in order to establish program direction. And you see this related with 3.1, that was where the mission statement was discussed. So this is a further part of 3.1, 3.1.2.2, that is a program mission, and this will carry 2 questions. Task 5 is evaluating the organization's capability by consulting with organizational leaders in order to develop, validate and assess the program objectives, priority, feasibility, readiness and alignment to the organization's strategic plan. So this is some kind of an evaluation, confirmation that organization's capabilities are in line with what we are, we are set up to do. So we want to reaffirm that we are really capable of doing it, and we are involving the organizational leaders in it. We are consulting with them. So this again relates with 3.1, the very first topic which we had discussed in task 1 also, organizational strategy and program alignment, and again you can expect 2 questions out of it. Task 6 is identify organizational benefits for the potential programs using research methods such as market analysis and high-level cost benefit analysis in order to develop the preliminary program scope and define benefit realization plan. Now we are setting on the job. Now we are trying to exactly specify what are the organizational benefits this program is
set out to deliver. And for that, we'll use certain research methods, and those research methods would be market analysis, cost benefit analysis, which kind of assessment, and this will give us a preliminary program scope and benefit realization plan. What is benefit realization plan? Naturally, we'll discuss later, but benefit realization plan is your plan how the benefits will be delivered and will be realized ultimately. So for whole of the program, and during the life of the program, several projects would be working, would be performed, and with the deliverable being produced by each of the project, ultimately some benefit is going to be yielded to the organization. So this relates to two topics. 3.1.1, that is the program business case, which relates with the analysis part of it, the feasibility part of it, and benefit identification, which is we are trying to see what are the benefits and what is the benefit realization plan. So 3.1.1 and 4.1 are the two areas from where you will study this task. So you will have 3 questions in the exam from this task. Task 7. Okay, let me. Zishan. जी जिशान. जिशान, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हेलो, कैन यू हियर मी? जी जी जी. सर एक तो मुझे जो है वो सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी टास्क 6 से, मे बी मेरी छोटी स्क्रीन है तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन जो नजर नहीं आ रही थी. दूसरा क्वेश्चन है टास्क 2 के बारे में. उसमें लिखा हुआ प्रीलिमिनरी एस्टिमेट्स. तो ये जो डिटेल्स के प्रीलिमिनरी से क्या मुराद है, उसमें किस लेवल के एस्टिमेट्स होते हैं? हाई लेवल एस्टिमेट जो होते हैं जिसको आप लंप सम कहते हैं, मोटा मोटा एस्टिमेट के जी अंदाजा क्या है आपका कि ये काम कितने में हो जाएगा. अच्छा. अब प्रोग्राम तो बड़ा बड़ा होता है ना जी, मतलब इट्स नॉट समथिंग लाइक अ प्रोजेक्ट की जी कोई 6 महीने साल में कंप्लीट हो जाएगा. प्रोग्राम कुड बी 10 years long, it could be 25 years long, it could be 7 years long. So you have to have some kind of estimate, some lump sum estimate. कोई अंदाजा तो होना चाहिए ना हमें. तो वो अंदाजा लगाने की बात तभी हो रही है, अभी डिटेल एस्टिमेट की बात नहीं हो रही. लेकिन है कि यू शुड हैव अ फेयरली गुड आइडिया कि कितना खर्चा हो जाएगा इस सारे प्रोग्राम के अंदर, और साथ ये कि बेनिफिट्स कौन कौन से कब कब डिलीवर होने का इम्कान है. ये बेनिफिट रियलाइजेशन में जब हम बात करते हैं वहां पे आती है ये बात टास्क 6 में. सही. तो सर ये फ्रेमवर्क में जो है हम उसकी हाई लेवल स्कोपिंग कर रहे होते हैं जो टास्क 3 है. हाँ, आप ये कह सकते हैं बिल्कुल कि हाई लेवल हम रोड मैप बना रहे हैं. रोड मैप यूं समझ लीजिए जैसे मैंने माइलस्टोन स्टैब्लिश करने होते हैं कि अच्छा जी मोटे मोटे काम ये होंगे, ये एक अकम्प्लिशमेंट होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, और ये इस बेनिफिट को कंट्रीब्यूट करेगी, और अल्टीमेटली दिस इज हाउ द थिंग्स विल मैच अप. This is not the program management plan, but this is just a very high level roadmap, how the things are supposed to turn out. Okay. But sir, with difference between the roadmap and framework, can we say that in the roadmap it's the high level milestones, but the framework is more like a boundary, like there we are also defining what is not included. Okay. What is, you can say, for example, we will not be exceed more than $1 billion. So that's the देखिए निशान, ऐसे है कि जब हम बात करते हैं ना फ्रेमवर्क की, तो फ्रेमवर्क है वो तरीका कार, दैट इज द मैकेनिज्म, दैट इज द वे ऑफ वर्किंग. अब आई नो कि मेरा ब्रॉडली मुझे पता है कि मेरा रोड मैप क्या है, हाउ आई वांट टू गो अबाउट इट. नाउ इसको प्रोग्राम के फ्रेमवर्क के अंदर फिट करना है. तो प्रोग्राम के फ्रेमवर्क के अंदर आप यूं समझ लीजिए कि आपकी कुछ ख्वाहिशात हैं कि दिस इज हाउ द प्रोजेक्ट शुड गो, प्रोग्राम शुड गो, और फ्रेमवर्क में आप उसको फिट करते हैं कि अच्छा इसको कहां कहां बेनिफिट यील्ड करने चाहिए, मैं प्रोग्राम को डिफाइन कैसे करूंगा, प्लान कैसे करूंगा. मतलब देखें अब जैसे पीएमबीओ के है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट है, ये क्या है? ये स्टैंडर्ड्स है ना. स्टैंडर्ड बेसिकली प्रोवाइड्स यू अ फ्रेमवर्क.
एक सांचा देता है, एक ब्रॉड वे ऑफ वर्किंग देता है. So this is just a way of working. यूं समझ लीजिए a way of working without data. Now a very high level data is contained in the roadmap. Now this you try to fill in this data into this framework. Okay. ओके चलें जी आगे. आप मुझे बताइएगा अगली स्क्रीन आपको नजर आती है कि नहीं आती. ये अगली स्क्रीन देखिएगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है नेट स्पीड की वजह से. Okay. I can see. टास्क 7 आ गया जी. ओके, टास्क 7 is about estimate the high level financial and non-financial benefits. Now we are now more focusing. अभी वो जो हमने ऊपर के लेवल पे स्ट्रेटजी रखी थी उसको हम अंदर फर्दर ट्रांसलेट कर रहे हैं. वी आर मोर फोकसिंग नाउ. थोड़ी थोड़ी डिटेल में हम चलते चले जा रहे हैं. अब वो कहते हैं कि क्या क्या फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे इस प्रोग्राम के, ताकि टू ऑब्टेन एंड मेंटेन फंडिंग ऑथराइजेशन. पैसे भी तो चाहिए ना हमें, कब कब कहां कहां से कितने कितने पैसे लेने हैं. इस बात को डिसाइड करने के लिए वी शुड नो कि हमें कौन कौन से बेनिफिट कहां कहां से यील्ड होने हैं. अगर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट यील्ड हो रहा है तो गालिबन मैं उसी को री इन्वेस्ट कर सकता हूं ना अपने प्रोग्राम के अंदर. प्रोग्राम तो लंबा है, वो तो से के 10 साल का है. अब उस 10 साल में जो मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू में की थी वो किसी बेनिफिट से अगर फाइनेंशियल बेनिफिट के तौर पे बाहर निकलती है तो आई मे हैव एन अपॉर्चुनिटी कि मैं उसको री इन्वेस्ट कर सकूं, या मुझे ये पता होना चाहिए कि ये फाइनेंसेस कहां से आएंगे. इस तरह के बड़े प्रोग्राम जो हैं हमारे यहाँ अनसक्सेसफुल हो जाते हैं कि उनकी ये वाली प्लानिंग कि बेनिफिट की कहाँ कहाँ पे यील्ड कर रहे हैं, क्या यील्ड कर रहे हैं और कब कब कितनी फंडिंग ऑथराइजेशन चाहिए, ये डिसाइड सही तरह से नहीं हुआ होता और एन वक्त के ऊपर जो फंडिंग सोर्स होता है वो हाथ खींच लेता है. There was a very famous project in Pakistan, and you might have heard about it, that was called left bank outfall drain. अब बात ये जी कि हमारे यहाँ तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के दरमियान फर्क नहीं करते. जैसा मैंने आपको कल बताया था कि इफ मतलब बड़ा एक इजी सा मैकेनिज्म है इसको डिफाइन करने का कि अगर तो वी आर डिलीवरिंग समथिंग, अगर हम किसी डिलीवरेबल या प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और उसके अराउंड प्लान कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट, if we are planning for the benefit and it is left upon us how we convert it into benefit, तो उसकी में एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और हर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल जरूर देगा लेकिन वो डिलीवरेबल अल्टीमेटली वो बेनिफिट यील्ड करेंगे. ये जो लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन की मैं बात कर रहा हूं, कहने को ये प्रोजेक्ट था और इसमें इन्होंने इंडस के लेफ्ट बैंक के साथ साथ एक ड्रेन बनानी थी डाउन टू द सी, और उन्होंने पानी जो था इंडस का मीठा पानी वो समंदर तक पहुंचाना था, एक्सेस वाटर. मगर एट द सेम टाइम दे वांटेड कि ये पानी उन उन जगहों से गुजरे जहां अदरवाइज पानी नहीं गुजर रहा, ताकि एरिया सैराब हो और खास तौर पे जो समंदर के पास का एरिया था उसमें बहुत ज्यादा सेम और थोर थी, जिसकी वजह से वहां कोई फसल नहीं उगती थी और कोई एनिमल लाइफ जो थी वो एक्सटिंक्ट हो रही थी. जो आपके ये इस किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं जो मतलब इन चीजों के बगैर रह नहीं सकते, वो एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे थे. तो उन्होंने ये कहा कि जी इस तरीके के साथ अगर हम पानी वहां पहुंचाएंगे, फसल होगी, ग्रीनरी होगी और अल्टीमेटली ये मसला हल होगा. अच्छा, अब आप इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं. You can say this is a project because this is a left bank outfall drain. You have to create a drain. Yes, of course we have to create a drain. But if the focus is drain, then it is a project. If the focus is to cultivate the land and it is focused on that benefit delivery, then it is a program. And if it is a program, then it is not only the matter of creating a drain, it could have a number of other projects. Maybe one of the projects could be creating awareness in the masses about this project, this program.
maybe one program could be the physical construction of the drain. Maybe one program could be, taking into account the wildlife and the extinction thing from the environmental point of view. So there could be a number of projects created around the benefit you have identified. So this is how we can look at this thing, and these things will be further clarified जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे. तो ये जो है task 7, this relates with the business analysis and planning, which is the topic in chapter 4.2, business analysis and planning. And you must be very well aware that business analysis is now recognized by PMI, not only as a certification, they are also creating standards on that, but they are somehow able to relate it with the project management. Although this is not project management, business analysis is not project management, but it has a very close ties with the project management, program management, and portfolio management. So business analysis and planning, this is the topic, and there are expected to be 3 questions from this task. Moving on to the task number 8, here we evaluate the program objectives. You see, there were certain strategic objectives of the organization to fulfill whom we have created this program, and now program has its own strategy. Program has its own objectives relative to regulatory and legal constraints. And from where these constraints are coming? These constraints are coming from the organization. Their social impact, their sustainability, cultural considerations, political climate, ethical concerns. See, we are talking here from more like strategic point of view. We are talking about not only the product, but how this initiative can be sustained. What will be the impact of this? Like, we do environmental analysis on such like programs. Cultural considerations. If we build this left bank outfall drain, what will be the change and effects on the culture around this area? How the political climate will change? Ethical concerns which will be raised. So here we are talking about a lot of dealing with people around us. These are the stakeholders. We have to align with them, and the program should be able to deliver. Deliver what? Programs deliver benefits. So they should be able to deliver benefits remaining within these constraints. So again, this is something to do with the business case, because we are looking at the stakeholders, agreement with them, and making them understand, and complying with all the requirements of social impact, sustainability, and all that. So we are talking about 3.1.1 program business case, and you can expect 2 questions out of it. Task 9 is obtaining organizational leadership approval. Now, we did that earlier as well in task 2. Yes, in task 2 we said initial validation and approval from the executive sponsor, but that was initial validation. What we are talking here, we are talking about obtaining the organizational leadership approval for the whole program by presenting the program charter. This is the point where the program charter is created, and now you are getting it signed by the big boss with its high level costs. Now you understand, charter is not the detailed plan. Charter, although for program, is quite a bit more detailed than a project charter, but still it is containing high level costs, major milestones of the schedule, and benefits in order to receive authorization to initiate the program. I have to prove it to my bosses that this carries benefits, this is feasible, and if they find this statement valid, only then they will approve it.
So this is once the program charter is signed, then we have a go signal. This thing relates with program approval, endorsement and initiation, which is topic number 6.2.2. We are expecting 2 questions out of this. You see how diversified the whole thing is. Something is from, chapter 6, and something is from chapter 3, and something is from chapter 4. So this is from all over. We are talking about initiation. We have to read through all relevant sections of all chapters. Task 10 is identifying and evaluating integration opportunities and needs. For example, human capital and human resource requirements and skill sets, facilities, finance, assets, processes, systems within program activity. Because program is large, because program has got many projects running under it, and program has to take care of all the benefits coming out of each project, and not only the product of the project but the benefits which are being yielded out of it. Therefore there is a lot of work involved here, which is more towards integration, the integration work. So this area concerns with the component oversight and integration. Component, what is a component? A project is a component. Any part of work, a major part of work within a program is a component. So a project is a component within a program, and there could be some other components which are not projects, but they are some work done at the higher level by program itself to facilitate integration of the benefits, or the yielding the sustainability of those benefits. So these are the component oversight and integration, 7.1.2.2, and you can expect 3 questions out of it. Task 11 is exploit the strategic opportunities for change in order to maximize the realization of benefits for the organization. Now this is interesting. Previously we were trying to identify the benefits, and we were trying to see from where these benefits would be ultimately yielded. And now we also created a benefit realization plan, and we have a timeline on which we knew when we are expecting certain benefits to get realized. Now what we are saying? Now we are saying at this stage that we are talking about optimizing and maximizing the realization of benefits for the benefit of the organization. So this is my task 11, and this task specifically relate to 4.3.2, which is program benefits and program governance. So you can expect 2 questions out of it. So these are the 11 tasks from the strategic program management. And then there are certain knowledge and skills which are required to be known from the perspective of strategic program management. These are not the tasks, but these are, you can say, concepts or terminology, or whatever you want to call it. But you must know what these things are. You must have experience working with these things. You must know what the business strategy is, what the business and organizational objectives are, economic forecasting, what is that, feasibility analysis. I know most of the things listed here, you might be practicing, you might be knowing it already, but naturally there will be certain titles and topics which you have never talked about, you have never known about them. Funding processes, funding models, financial measurements, intellectual property laws and guidelines, legal and regulatory requirements, marketing, portfolio management. You don't need to remember all these things, but you must know what they mean. So if at all in your exam it refers to any one of these topics, you must have a quick memory recall, and you can understand what he is talking about. And as I said, most of these terms are already known to you. Then we move on to the
program lifecycle. Just a minute, yeah. No. Okay, before program lifecycle, he has done an interesting job here. But we have already said task 1. This was the task 1. To just elaborate, because these tasks are very important. Each and every word used in these tasks is important. So he has written the same task in a diagrammatical format, as if you can understand and remember how it is presented. Let me use the highlighter and show you. It says perform an initial program assessment. This is the very first task. Perform an initial program assessment. So we are supposed to be performing an initial program assessment, right? This is a job you must know. Now, how do you do that? By defining what all is to be defined. Objectives are to be defined, requirements are to be defined, and risks are to be defined. Like you see, he has shown in the diagram. And why are you defining them? In order to ensure program alignment. With what? With organizational strategic plan, with organizational objectives, with priorities, with vision, and with mission statement. You see, how do you translate each task? So this diagram, which is shown here, will make your life a bit easier because I have already done that for you. This breakdown, you can read it from the diagram rather than from the text. Similarly, this is task 2. This is the complete, all the words used. You see, establish is taken from here, establish. A high level roadmap, this is high level roadmap. With, this is with. Milestones and preliminary estimates in order to obtain, it means executive sponsors. You are obtaining it from the executive sponsor. What? You are obtaining initial validation and approval. You see, whole of the statement has been broken down in diagram and you can easily understand it. That is exactly what I want, that you should be able to understand what it all means. This is task 3. I'm not going to go into each one of these tasks, but you see, this is how it has been broken up. Exactly the same words, but they are now in the diagrammatic form. This is task 4, task 5, task 6, task 7, and with every task I have mentioned the relevant area to be studied in the standard and the number of questions expected out of it. So this could be a template for you to prepare for the exam. This will make your preparation much more easier and focused. Task 8, 9, 10, 11. And this is the summary of whole of this domain. 5, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 3. These are the number of questions expected from these areas, right? These are the areas you need to study to prepare for this domain, and these are the number of questions from each of these areas, and ultimately this comes out to be whatever, 26 questions. Okay. Just tell me if you are fine with whatever we have talked about till now. ये समझ आ रहा है? जी सर. अगर आप ये समझते हैं कि मैं किसी चीज की गैर जरूरी डिटेल में जा रहा हूं या कोई इस तरह का मसला, मुझे स्टाइल को चेंज करना है, तो मुझे बता दें. I'm good, sir. Okay जी. Then we move on to the second domain, program lifecycle. Although when we will study the program lifecycle in the end, because as per the structure of the standard for program management is concerned, this is the last chapter, program lifecycle.
but from domains point of view, this is a second domain. Although we will study it later, but for the time being, we are showing it according to the syllabus. So program lifecycle, this is the distribution of the program lifecycle, and this I have already shown you this distribution, but I have just highlighted it that there are 35 tasks, 44% questions, which is 75 questions in total, and the distribution of these 75 questions is in initiation, planning, execution, controlling, and closing. So 12, 16, 24, 17, and 6, if you sum them up, that come out to be 75 questions. Now look at each one of these tasks. The first task is to develop a program charter using input from all stakeholders, including sponsors, in order to initiate and design program and benefits. Now, you may say that this has already been done. Yes and no. Previously, we did talk about the charter. I'll go back to that. That was task leadership approval of the program by presenting the program charter with its high level cost. So at that stage, we were doing at high level cost. And remember, this we were discussing in the strategic program management. Now, the interesting part is that the strategic program management is happening throughout the project, and the life cycle started. So this is the bifurcation point from where the charter has been presented, and while in the life cycle, we talk about the process of developing this charter. So this is the same process. This is happening, the same thing is happening, but this is happening initiating from the strategic program management and actually happening in initiation. So program charter using input from the stakeholders, including sponsors, in order to initiate and design program and benefits. 2 questions, and this can be seen in program formulation 7.1.1.1 and program roadmap and charter development 8.3.1.6. Task 2 is to translate the strategic objectives into high-level program scope statement by negotiating with stakeholders, including sponsors, in order to create a program scope description. 2 questions, and this is 8.9, program scope management. Actually, what they have done is that they have broken the life cycle down into 9 knowledge areas. And interestingly, these knowledge areas are not shown as they are shown in PMBOK. Stakeholder, they are not treating as a knowledge area because stakeholder is a complete domain by itself in program management. So the remaining 9 knowledge areas are shown here in alphabetical order. So from that alphabetical order, this gets the last number 8.9. You will see to that. You see, this schedule management is 8.8. Scope is 8.9, just because H comes before O. You see, alphabetical order. Program schedule is first and program scope is later. Anyways, so we are not really much concerned about what comes first and what comes later in the standard, but we just need to remember where it is. And 8.8 is program schedule management and 8.9 is program scope management. So you see, from program schedule management you are getting 2 questions, from scope you are getting 2 questions, from charter you are getting 2 questions, and similarly program infrastructure development. And that what it's doing, it is developing the accountability metrics for the program by identifying and assigning program roles and responsibilities. So this is the job which we have studied in PMBOK as the job of HR. So this is covered in 8.3.3, program infrastructure development. Task 5 is defining the standard measurement criteria for success
for all constituent projects by analyzing stakeholder expectations and requirements across the constituent projects in order to monitor and control the program. So this is the mechanism of monitoring and controlling within the program, and this refers to 3.1.2, the program plan, and 4.2, the benefit analysis and planning. You see, we are referring back to the benefits chapter. So we can refer to stakeholder, we can refer to benefit. All these things are happening mostly simultaneously. All the domains are happening simultaneously. And there is a diagram I'll be showing you later where the relationship of various 5 domains is made slightly more clear. Task 6, this is for the initiation. Conduct program kickoff. Once the initiation, all other job is complete, you kick off the project with key stakeholders by holding meetings in order to familiarize the organization with the program and other stakeholder buy-in, obtain stakeholder buy-in. And this is the program preparation, 7.1.1.2, and you can expect 2 questions. Now in continuation, we move on to planning, and in planning, we have got 7, 8, 9, 10. These tasks are for that. Develop a program, detailed program scope statement. So here we create the program scope, and this comes under 8.9 program scope management. Then develop the WBS in order to determine, plan, and assign the program task and deliverable. Now remember, this WBS is not the project WBS. This is the WBS of the program. So it is much higher level WBS. And this also relates to scope planning. Therefore, this is 8.9.1. Then establish a program management plan. This is where the program management plan is developed and scheduled by integrating plans for constituent projects and creating plans for supporting program functions such as quality, risk, communication, and resources. There are certain functions which will run across all the projects. So such like functions of the project quality, project risk, project communication, the integrative knowledge would be in the program management plan in order to effectively forecast, monitor, and identify variances during program execution. So this relates to 8.3.2, program management plan development and program scope planning. This is 2 questions, and similarly we have got resource prioritization is referred in task 10. Again 2 questions. Optimize the program management plan by identifying, reviewing, and leveling resource requirement. So when we level the resources, we are actually doing what? We are optimizing the program management plan here. For example, human resources, materials, equipment, facilities, finance, all of these things have to be optimized. We have to be more effective. And how can we be more effective? If we use less resources, do more job. The minimal possible number of resources used and the maximum best results to be achieved in order to gain efficiencies and maximize productivity synergies among constituent projects. Task 11 is defining the project management information system. Where have we studied the project management information system? In PMBOK, we said PMIS is one of the enterprise environmental factors. PMIS is developed by the organization. So here it says, define the PMIS, the project management information system, by selecting tools and processes to share knowledge, intellectual property, documentation across constituent projects. So we are talking about managing more than one project, and all the constituent projects of the program, they should be governed by the same project management information system, as if in order to maximize the synergies and savings in accordance with the governance model. Task number 12, identify and manage unresolved project level issues by establishing a monitoring and escalation mechanism and selecting a course of action consistent with the program constraints and objectives in order to achieve program benefits. So here it is talking about issues and how the issues can be escalated. In the
scenario of a program, there is a high likelihood that there will be lot more issues in programs than in projects. Higher you go, vaguer the things are. So project may be less uncertain, but program is much, much more uncertain. Operation can be pretty much least uncertain, but project is uncertain and program is even further more uncertain. Therefore, issues will rise and we must know the complete mechanism of how to escalate the issue. So for that, refer to 6.2.4.9, that is issue escalation process. 2 questions could be from there. Develop the transition, task number 13. Develop the transition integration closure plan by defining exit criteria in order to ensure all administrative, commercial and contractual obligations are met upon program completion. So this is the life cycle going on, and in planning, I must decide how a program can be completed, transitioned or properly integrated. So if at all there is a need to close the project program abnormally, then I must understand the requirements for that. How can we do that? What are the administrative requirements? What are the commercial requirements? And even if the program is culminating as planned, even then it has to go through a transition cycle, and the benefits have to be sustained till now, and then the realization of the benefits in future is handed over to the operations. So this is 8.3.6 program transition and benefit sustainment, and task number 14 is to develop KPIs by using decomposition mapping, balanced scorecard in order to implement scope and quality management system within the program. 2 questions, and this relates to benefit identification 4.1 and program procurement administration 8.4.3. Task 15 is monitor key human resources to program and project roles, including subcontractors, and identify opportunities to improve team motivation and negotiate contracts in order to meet or exceed benefit realization objective. So here it is talking about the resource optimization, resource prioritization, what resource will be beneficial to be employed where. This is 8.6.2, and you will have 1 question from this area as well. Task 16, this is execution. 24 questions of execution start from here. 6.2.4.6 and 8.3.4.1, component initiation criteria and the component initiation. Now it is talking about the constituent projects of the program to be initiated, the chartering of the projects within the program and initiating those constituent projects by assigning a project manager to them and allocating appropriate resources in order to achieve program objectives. So this specific function is task 16 and relates with the initiation of the components. Task 17 establish consistency by deploying uniform standards, resources, infrastructure, tools, and processes in order to enable informed program decision making. What are we educating here? We want to have a mechanism, a consistent method of doing things in the program in future. So for the whole process of program, throughout the program, we need to be consistent. So we must have some policies and procedures. We must have some guidelines to follow. And if everybody is following the same guidelines, then the consistency will be there. And that guideline is provided in the governance plan, program governance plan. We are establishing the program governance plan here, 6.2.4, and this will encompass the 3 questions coming from that area. Task 18
Establish a communication feedback process in order to capture lessons learned and team experiences throughout the program. So now what we are talking about two things here. Number one, a communication feedback process or a mechanism, and why we want to register the lessons learned and the experiences of the program team. And this will happen throughout the life of the program. So these lessons learned will be continuously recorded throughout the life cycle. This relates to information distribution and lessons learned database 8.1.2 and 8.1.2.4. Task 19, lead human resource functions by training, coaching, mentoring, and recognizing the team in order to improve team engagement and achieve commitment to the program's goals. So this is motivating your team, making your team ready for the job and providing them whatever help, assistance or advice they require, and let them work. Do not try to micromanage your people. Give them the powers, but at the same time, keep an eye on them. This would relate to 6.6.5 and 8.6. First one was program education and training, program management, education and training at the organizational level, and then within the program resource management. What resources to be employed where most effectively. Question 20, review your program manager's performance. Review your project manager's performance in executing the project in accordance with the project plan in order to maximize their contribution to achieving program goals. You must have full control over your project managers, and you should be able to provide them sane advice. And that is only possible when you know how the things work. Then task 21 is to execute the appropriate program management plans, which include the quality, risk, communication, etc., using the tools identified in the planning phase and by auditing the results in order to ensure the program outcomes meet stakeholder expectations and standards. So this is from Program Execution Management 8.3.4, and you will have two questions from this area. Three more jobs from execution. Consolidate your project and program data. Now, it is not only the projects, the data of the project is to be consolidated into a program, and program data is also further summarized by using predefined program plan reporting tools and methods in order to monitor and control a program performance and communicate to the stakeholders. Three questions. And the areas from where you will study this is 8.1.3 program performance reporting and 8.3.5.1 program performance reports. Task 23 is a program performance reporting. Evaluate the program status in order to monitor and control the program while maintaining current program information. For this, you can refer to program performance reporting and program performance. There are three questions going to be there. 24 is approve closure of the constituent projects upon completion of defined deliverables in order to ensure scope is compliant with the functional overview. This is the approval in execution. Three questions, and this is the component transition. As far as controlling is concerned, task 25 is to analyze the variances and trends in cost, schedule, and quality and risks by comparing after actual and forecast to planned value in order to identify corrective actions and opportunities. So a number of references: 8.5.3 quality, 8.7.5 risk,
8.8.2 schedule, 8.9.2 scope. If you look at it closely, you will find that all the project objectives are here. You used to call these things as triple constraint, but triple constraint is not a valid term now. Now the environment imposes certain kinds of constraints on you. Task 26 is update program plans by incorporating corrective actions to ensure program resources are employed effectively in order to meet programs objectives. And it again refers to a lot many things, to quality, to monitoring, to schedule control, and to cost. So when you're doing the task 6, updation of the program, you are actually dealing with all of these things. Task 27 of controlling, managing program level issues. Project level issues is not the responsibility of program manager. This is the responsibility of the project manager. So he can provide assistance to the resource management, financial technology, scheduling by identifying schedule, a work of action consistent with the program scope, constraints, etc. So establish a program governance plan that will give you the rules for doing this. Manage changes in according with change management plan in order to control scope, quality, schedule, cost, contracts, risk and rewards. Task 29, conduct impact assessment. Now you have done this all. Now you have to, in controlling, you have to conduct the impact analysis or assessment for program changes and recommend decisions in order to obtain approval in accordance with the governance model. What we are doing here is we are continuously reassessing the program for any changes that need to occur, and if those changes are applied to your project, then the whole plan or the governance model has to be revised. Task 30, manage risk in accordance with the risk management plan in order to ensure benefit realization, and this is from 8.7.5, the chapter on risk. Closing, we have 31 tasks. Task 31, which is completing the program performance analysis report by comparing and value to plan value of scope, quality, cost and time and resources to some extent in order to determine the program performance. 32, obtain stakeholder approval for the program closure. 33, execute the transition and a close out of the program and constituent project plans, for example, performance administrative and PMIS program closure, etc. So this relates to program transition and benefit statement. Program closure, conduct the post-review meeting by presenting the program performance report in order to obtain feedback and capture learner. Lessons learned. So this is task 34, and task 35 is knowledge transition. Once you have completed the job, program has been closed down, then whatever you have done must be transferred to the organization as if they can take benefit of this. These are the cross-cutting areas like benchmarking. You must know what it is. Closeout plans, procedures, techniques and policies, decomposition techniques like work breakdown structure, financial closure agreements, and so on and so forth. So there's a long list of these things, and if you don't understand any one of these, you need to relate yourself to some other books and standards and try to understand these concepts. Root cause analysis, schedule management, scope management, service level agreement, so on. Right, before we jump into initiation, are there any questions?
I was just wondering if there is a program steering committee, like once you have initiated a plan and all that, and if there is, अगर program के अंदर 5-6 projects मेरे चल रहे हैं, तो would I be reporting only in the program steering committee or would there be separate project steering committees as well? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली हुआ ये कि आप चूंकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्रोग्राम की अम्ब्रेला के अंडर आ गया, उसकी अलग अलग स्टीयरिंग कमेटीज प्रोजेक्ट की नहीं होंगी। जहां तक ओवरऑल प्रोग्राम का ताल्लुक है, देयर विल बी अ प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर को पावर्स दे रहा है और प्रोजेक्ट मैनेजर को चेक कर रहा है। सो ऑल डिसीजंस अबाउट विच प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, विच हैज बीन स्टार्टेड, उसके स्टार्ट फिनिश का सबकी इजाजत आपको अपने गवर्नेंस बोर्ड से लेनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नेंस बोर्ड जो है वो डील प्रोग्राम मैनेजर के साथ करेगा, जबकि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका अलहदा से जो कोई बोर्ड नहीं होगा। अगर हुआ भी, प्रोजेक्ट बोर्ड अगर एग्जिस्ट करता भी है, दैट वुड बी अंडर द प्रोग्राम मैनेजर। सो प्रोजेक्ट बोर्ड इज डिफरेंट देन द program governance board. Program governance board is the body above the program manager, and project boards are under command of the program manager. So that means any decisions pertaining to those projects which are under the umbrella of my program would be sort of my decision, like the program manager's decision. Yeah, right? all the decisions are yours, but at the same time, the main key milestones of of those projects, like the start of a project and the finish of a project, has to be approved by the program governance board. But within a project, you have all the powers. The philosophy is, if you remember in project management also, we develop when we develop the scope statement, we break our project down into phases, and we decide the no go decision points are the milestones. So these decision points are to be presented in front of the project board. Project board will come and check the start and finish of every phase. If you understand this concept, then in this case, in program management, program governance board inspects and checks and reviews every project start and end. But what all instructions are there for managing the project itself, and whatever is the ingredient of our project is under direct command of the program manager. Are we okay? Yes, sir, I'm fine with this. Okay. Can we have a little break? I have to go to washroom and I'll just get back 2 minutes.
Right, Jay, I'm back. Let's move on to initiation. We are still in the program life cycle, and within initiation, what we have, just a minute. Okay. So these are the tasks within the program lifecycle initiation. In initiation, the first task is to develop the program charter. And exactly like we have already discussed in the previous strategic domain, that the statement written above is diagrammatically shown here. Exactly the same to the references which you need to study are shown here. And the number of questions expected are written on this side. So this clearly shows the first task of initiation. Then this is the second task, where you translate the strategic objectives into high-level program scope statements by negotiating with stakeholders, including sponsor, in order to create a program scope description. We did talk about the program scope, but here is when this scope is actually being created. High-level scope is being created. Then this point was about the schedule. So here, develop a high-level milestone plan using goals and objectives of the program. This statement is translated here, and it very clearly depicts what all is to be done. Task 4, task 5, 6, and this is planning. Now is planning. So I did not explain these because we have already talked about them. Now in planning, we are having these points. We have again discussed these. Only the diagrammatic display is making it convenient for you to understand. I would ask you to read through each and every task very patiently. That's why I'm wasting so much time on this. Although we can straight away jump onto the standard and start studying the concept, but uh, this is important before starting that, because it will tell you what is to be prepared. So when we are reading those things, we are studying um, the standard chapter wise, then we should understand that these are the things which are to be emphasized more and understood more clearly. Like you see, all these words written here. You see project, program, vision, objectives, goals, influences, variables, facilitating overall planning. This all are the keywords you must keep at the back of your mind. And once you are studying the chapters, then you can focus on those terms which you don't already know. This is task 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Exactly the same we have discussed just a few minutes ago. This is execution. Each task on one sheet, one slide. This is task 16, 17, 18 under execution, 19, 20, and 21. 2, 3, 4. Then we move on to controlling. Task 25, 26, 27, 28, 29, and 30. Then closing. Task 31, 32, 33, 4, 5, and that's it. I'm sorry, this slide is not relevant to this because this is the slide copied from the strategy. So this is not a summary of life cycle. Next is the benefits domain. Benefit domain has 11% of weightage, 8 tasks. So there would be approximately 16 questions.
if you look at it, it comes out to be around 2 questions per task. So what are the tasks? The first task is to develop a benefit realization plan and its measurement criteria in order to set the baseline for the program and communicate to the stakeholders. You see, this is important to establish the expectations of the stakeholders. If we know as a program manager that these are the benefits to be realized during the life of the program, and this is the general layout of the benefits when a specific benefit will be realized, and how long will we sustain it, and how and when will we transit it to the operations or to the customer, and how do we measure that that specific benefit has really been achieved. How would we know that? What are the key performance indicators for that? And not only that, we are also communicating with the stakeholder and the sponsor, and we are showing our progress by how much the benefits have been delivered. So for this task, you have to refer to 4.2 benefit analysis and planning. Chapter 4 is about benefit, the domain of benefit. Benefit delivery, identify and capture synergies and efficiencies identified throughout the program lifecycle in order to update and communicate the benefit realization plan to stakeholders. Again, it is talking about the same thing. It is talking about the communication of benefit realization plan to the stakeholder. Even in the previous point, it talked about the communication of the benefits to the stakeholders. But here we are talking about the delivery of the benefit. So identify and capture those synergies and efficiencies identified throughout the program lifecycle in order to update and communicate the benefit realization plan. We are telling the stakeholders and the sponsor what has been achieved. Benefit sustainment. Once a benefit is realized, it has to be sustained. If I can realize a benefit and I do not have resources to sustain it, the whole advantage will go for a fix. It becomes completely useless. Then is the benefit delivery. 4.3, monitor the metrics. Metrics we have established for the measurement of the benefits. Do what if analysis scenarios and simulations are to be run just like in Monte Carlo, and utilizing causal analysis in order to take corrective action in the program and maintain and or potentially improve benefit realization. You see, only the terminology has changed a bit. The scope has been enlarged for the program. Otherwise, we are doing the same what if analysis, we are doing the same causal analysis and all those things, but the purpose is slightly different here. It is not exactly looking at the project level, but at a much higher level. Task 5 is program benefits and program governance. Verify that the close, transition, and integration of constituent projects and program itself meet or exceed the benefit realization criteria in order to achieve program strategic objectives. So our main scope is always and every time to keep our projects aligned with the program strategic objective, and the program benefits are aligned with the organizational strategic objective. Just a minute. Task 6 is to maintain the benefit register. Like we had risk register, issue register, and all those kinds of registers. Here we will maintain a list of all the benefits expected from this project. And interestingly, these benefits are not static in nature. You see, the project is long. It is say 7 years, 10 years, 20 years. So
the benefits you visualize in the beginning of the program might not remain the same over the life of the program. So this benefit register have to be maintained where the benefits are updated continuously and recorded. All the program progress is recorded onto it. And if there is a revision to the benefits, new benefits are introduced later on, they will be accommodated into this benefit register. So we need to have a look at 4.1.2 benefit register, which is part of benefits uh, just a moment, montification. Okay, 4.1. I think there is a spelling error. 4.2.3 is the update to the benefit register, and 4.2, which is the main heading, is the benefit analysis and planning. So this all 4.2 and 4.1 is to be studied broadly, and specifically 4.1.2 and 4.2.3 relate to this task number 6, and this again stands for 2 questions. Task 7, analyze and update the benefits realization and sustainment plans. You have a benefit realization plan and you have a benefit sustainment plan. For uncertainty, risk identification, mitigation, risk opportunity in order to determine if corrective actions are necessary and communicate to the stakeholders. Task 8 is to develop a transition plan to operations in order to guarantee sustainment of products and benefit delivered by the program. The knowledge you require to know at this stage in benefits is what is benefit optimization, what is benefit business value measurement, decision tree analysis, maintenance and sustainment of the program benefits post delivery, after delivery, performance and quality metrics, and program transition strategies. And these are the diagrammatical layout of all these points we just discussed. Then is the stakeholder. Okay, before we talk about stakeholder, I know you must be confused about lot many terms because I'm not really explaining anything and I'm just showing you these tasks. But to make the things slightly clear, let us have a little discussion on it. Okay, tell me, how do you differentiate between a deliverable and a benefit? ये तैमूर आप बताएंगे? मेरा ख्याल में जो है ना डिलीवरेबल जो है ना ये लार्ज कंसेप्ट है, बेनिफिट उसका पार्ट हो सकता है. क्या हो सकता है जी, फिर बताइएगा. यानी जो डिलीवरी विजन या मिशन होगा वो भी हो सकता है. बेनिफिट्स में जो है ना कोई फाइनेंशियल इस तरह की चीजें हो सकती है सर, मेरा ख्याल में. मतलब ये और छोटा वो है और वो बड़ा है जी. बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट यानी फाइनेंशियल और ये चीजें सर, इसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया था. अच्छा, जिशान आप क्या कहते हैं? Yes. Okay. I think in my view, benefit is kind of an umbrella. For example, if we want to launch our products in a new country, let's say in Middle East, so that's a benefit. And the products, the deliverables could be that we need to establish an office. That's one delivery. We need to train the people. We need to establish the systems and so on. So these are the deliverables. So the deliverables are some concrete things under the umbrella of benefits. Right. Are all the output, the real value of deliverables is the benefit. Okay, right. Abu Bakr? अबू बकर आप बताएंगे? एहसन सईद? जी सर, आवाज आ रही है अब आपको? जी जी बिल्कुल.
जी सर। सर मेरी नज़र में डिफरेंस इसका वही है जो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट में है कि जैसे आपने ड्रेन की एग्जांपल दी, ड्रेन बंद तो गई लेकिन वो किसी के काम आई, नेबर में कोई फर्क आया, लाइफ में कोई फर्क आया, वो उसका बेनिफिट कहलाएगा। बिल्कुल। तो डिलीवरेबल स्कोप उसका लिमिटेड स्कोप है, बेनिफिट है कि वो पर्पस में, कॉन्टेक्स्ट में, एनवायरनमेंट में क्या चेंज लेके आया। बिल्कुल मेरी नज़र में सर ये बिल्कुल सही है। और कौन रह गया जी? फैसल, सॉरी फहद। Sir, I think deliverables basically are in alignment with the project objectives. I mean, that we deliver to the clients, like whatever we have articulated as the objective of the project. I mean, that I think is the deliverable. To me, benefits itself is like uh, it's kind of vague, if I may call it. I mean, and it's realized after a long term. I mean, because if you are working on a program having multiple projects, then obviously maybe you'll complete one of the project slightly earlier than others. So you may get the deliverable earlier, but the benefits would, maybe start showing up in like 4 or 5 years time frame or something like that. वंडरफुल वंडरफुल। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप सब लोग तकरीबन ठीक हैं। तैमूर, आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो अलाइनमेंट में नहीं है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। फर्ज करें कि जी सर। आपके पास प्रोजेक्ट है कि आपने केपीके में एक गांव के अंदर एक स्कूल बनाना है। तो ये क्या है, इसका मतलब व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इट? सर मैं सुना नहीं हूँ, क्रॉस कर दिए बीच में। हमने कहा जी कि केपीके के एक गांव में हमने एक स्कूल बनाना जी है। जी सर। ये क्या है, प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है? ये प्रोजेक्ट है सर। ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, प्रोजेक्ट जब आप बनाते हैं तो बड़ा सोच समझ के बनाते हैं, फिजिबिलिटी बनाते हैं, अलाइनमेंट देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ देखते हैं। मगर आपने बनाना क्या है? बनाना आपने स्कूल है। जी सर। ओके, आप स्कूल बना देते हैं बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिकेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स। जब वो बन जाता है तो आप हैंड ओवर कर देते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी यहां तक ही होती है कि उसको जो चीज दी गई है बनाने को, वो अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिकेशंस वो चीज बनाए और उसे अप्रूव कराए, उसकी एक्सेप्टेंस कराए और हैंड ओवर कर दे। जब वो हैंड ओवर कर देता है तो प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर की भी छुट्टी हो जाती है, कहानी खत्म। लेकिन अगर ये स्कूल जो आपने बनाया है ये चलाया ही ना जाए, इसमें बच्चे ही ना आए, इसमें टीचर्स ही पोस्ट ना हो, तो जिस मकसद के लिए ये स्कूल बनाया गया था वो मकसद तो पूरा ना हुआ। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? प्रोग्राम मैनेजर। बट इन केस ऑफ अ प्रोजेक्ट देयर इज नो प्रोग्राम मैनेजर। अगर एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, आपको कहा जी स्कूल बना दें, तो आप उसके डिलीवरेबल के तो जिम्मेदार हैं, लेकिन जी उसके बेनिफिट के जिम्मेदार कौन होगा अगर वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है? तो ये तो पोर्टफोलियो हो गया सर। पोर्टफोलियो होगा। हाँ जी, और किसी की क्या राय है जी? सर स्पॉन्सर। स्पॉन्सर होगा। और कुछ? एनी अदर आइडियाज? ये दोनों जवाब ठीक हैं जी, ये दोनों जवाब ठीक हैं। बात ये जी कि जिसने आपको हुक्म दिया कि ये काम करो, उस काम की जिम्मेदारी भी उसी की है। मतलब बेनिफिट उसी ने देखा होगा ना, उसी ने सोचा होगा कि ये स्कूल क्यों बनाना है, जी और उसने ये फैसला करके, लाजमी बात है बिजनेस एनालिसिस वाले इन्वॉल्व हुए होंगे, उन्होंने फिजिबिलिटीज बनाई होंगी और उन फिजिबिलिटीज की रोशनी में ये फैसला हुआ होगा कि अगर ये स्कूल बन जाए तो इलाके में बड़ी तालीमी मेयार बहुत बेहतर हो जाएगा। अब वो आपका एक ड्रीम था, आपका एक बेनिफिट आपके जहन में था कि यार ये स्कूल बन जाए तो इससे
इतना तालीमी मेयार इम्प्रूव हो जाएगा। ये वो करना चाहता था, ये वो करना चाहता था जिसकी वजह से उसने स्कूल बनाने का ऑर्डर दिया। जब स्कूल बन गया तो अब वो उस स्कूल से वो बेनिफिट लेना ही नहीं चाह रहा या उस बेनिफिट को परसू ही नहीं कर रहा, तो स्कूल बनाने का मकसद तो फौत हो गया ना। जी इसका सर, मतलब है हमने बेनिफिट समझ में। जितना पैसा हमने उस स्कूल को बनाने में खर्च किया, दैट would not be converted into the desired benefit। ऐसे ही है जी ना। सर, जी सर, जी सर, डिलीवरेबल हमने दे दिया, अपना स्कूल बना दिया, लेकिन बेनिफिट हमने रियलाइज नहीं किया। जो तालीम देना था मकसद पूरा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, मैंने उल्टा बोला था। यस सर। हाँ जी। तो बेनिफिट जो है वो प्रोजेक्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट मैनेजर का तो कोई कसूर नहीं है। भाई अगर बिल्डिंग आपने जो बनाई है वो टूट जाए, गिर जाए, ठीक ना बनी हो, तो प्रोजेक्ट मैनेजर की गर्दन पकड़ लें जाके आप। लेकिन अगर वो स्कूल चलता नहीं है तो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या कसूर है? नहीं है ना। इसका मतलब जी प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी यहाँ खत्म हो जाती है। यही वजह है कि हमें प्रोजेक्ट मैनेजर से एक बड़ी सोच वाला बंदा चाहिए जो उन बेनिफिट्स को ऑर्केस्ट्रेट कर सके, उनको विजुलाइज कर सके, उनको स्ट्रेटेजिकली लिंक कर सके। उसको ये नहीं कहा जाता कि तुम एक स्कूल बनाओ या एक कॉलेज बनाओ या एक यूनिवर्सिटी बनाओ। उसे कहा जाता है कि भाई ये गांव है, इस गांव का तालीमी मेयार यहां से बढ़ा के यहां तक ले जाओ। जैसे वो पहले बात हो रही थी ना कल कि जी वो हमारे प्रोजेक्ट्स को मिला के प्रोग्राम बना दिया गया है और प्रोजेक्ट्स को ही वो डायरेक्टली देख रहा है जो स्पॉन्सर है। मुझे उसमें एतराज कोई नहीं है। द ओनली थिंग इज कि बेनिफिट कहाँ है। अगर बेनिफिट नहीं मैनेज कर रहा तो प्रोग्राम मैनेजर की एग्जिस्टेंस का फायदा ही कोई नहीं है। इफ यू आर मैनेजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स which are all delivering deliverables independently and individually, तो देन फिर ये प्रोग्राम तो ना हुआ, इसमें बेनिफिट तो है ही नहीं। लेकिन मैंने अभी आपको वो जो लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन की एग्जांपल दी थी उसमें मैंने आपको बताया कि एक ही चीज को हम बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो महदूद सोच के साथ वो प्रोजेक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी सोच बढ़ा लूं, उसका एक्सटेंट बढ़ा लूं और उसको एक बेनिफिट के तौर पे ट्रीट करूं, तो देयर कुड बी अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम लेफ्ट बैंक आउटवर्ड ड्रेन। एंड इफ those benefits are kept in mind first and then we decide what to make, and the decision of what to make is with the program manager, then it is a program। क्यों जी, आप लोग मेरे साथ हैं? जी सर। मेरा ख्याल है कि आप सब ने जो जवाब दिया है वो ठीक है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन मैं सिर्फ ओवर एम्फसाइज कर रहा हूं इस पॉइंट को कि हमें ये वाजे हो जाए कि प्रोग्राम और प्रोजेक्ट के अंदर वाजे फर्क है। प्रोग्राम की सारे बेनिफिट्स की जिम्मेदारी प्रोग्राम मैनेजर के ऊपर है। उसने तमाम प्रोजेक्ट्स के डिलीवरेबल्स को लेना है। अगर एक ने स्कूल बनाया है तो स्कूल को चलाना है, उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई है उसको चलाना है, और उससे एक खास मुद्दत तक बेनिफिट्स लेके दिखाने हैं कि हाँ यार ये से बेनिफिट निकलते हैं और ये सही बेनिफिट निकल आए हैं और अब ये अपने ट्रैक पे चढ़ गया। इसको हम कहते हैं सस्टेन करना। इसको हम कहते हैं सस्टेन करना। एक तो बेनिफिट निकला, स्कूल बना, स्कूल चला, और फिर मैंने 4-5 साल उस स्कूल को चलाया, ये मैंने उसको सस्टेन किया। अब जब वो अपनी गरारियां उसकी चल पड़ेंगी, when it starts working, when it starts moving, now is the time कि मैं बेनिफिट आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ से ऑपरेशंस वालों के हवाले करता हूं या कस्टमर या स्टेक होल्डर के हवाले करता हूं। एंड हवाले करने का जो अमल है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। ठीक है जी। और जब ट्रांजिशन मुकम्मल हो जाती है तो प्रोग्राम खत्म हो जाता है। मगर सारे बेनिफिट अगर सस्टेन होने के बाद, मतलब डिलीवर होने के बाद, सस्टेन होने के बाद ट्रांजिट हो गए हैं, तो अब आपकी एज अ प्रोग्राम मैनेजर जिम्मेदारी खत्म हो गई। आपको जो काम दिया गया था आपने कर दिखाया। राइट जी। इफ वी ऑल एग्री विद दैट, आई विल मूव ऑन विद द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट।
सर ये जो जी जी, एक मिनट फिर बोलिएगा। सर ये अगर हमारे जो है इधर प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम घर बना रहे हैं, 200-300 घर बना रहे हैं, इसका हमारा प्रोग्राम है। जब ये घर बन जाते हैं और हम जो है ना उसको हैंड ओवर कर देते हैं तो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता। नहीं, ये घर अपने को लोगों को बताना भी हमारा। हैंडओवर करने के बराबर है। उस घर में कोई रहेगा, उस घर से सोसाइटी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, वो आपने सोचा कि नहीं सोचा? अगर उसको टारगेट किया हुआ है तो फिर आप इन घरों को बना के, इस कॉलोनी को बना के, घरों को बना के, बेच के, लोगों के हवाले करके, फिर भी अगले 4-5 साल तक यहीं बैठे रहेंगे और इनको मैनेज करते रहेंगे, सस्टेन करते रहेंगे, इनके बेनिफिट्स को देखेंगे कि ये वो चीज जो हमने सोची थी वही निकल रही है या नहीं निकल रही। से कि आपने कहा जी लोगों की गुर्बत दूर होगी, अगर गुर्बत दूर नहीं हो रही तो फिर ये घर बनाने का क्या फायदा? पता लगे आपने घर बना के दिया, उसने बेच के खा लिया, जिस मकसद के लिए घर बनाए थे वो उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, और फिर वो सड़कों पे आया हुआ है, भीख मांगता फिर रहा है। तो इसका मतलब बेनिफिट रियलाइज नहीं हुआ। आपने सस्टेन करना है। एक और प्रोग्राम होगा जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें एजुकेट किया जाएगा कि जनाब ये जो मैं आपको रिसोर्स देके जा रहा हूँ इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। So a number of projects will be there within this program, which will ensure the delivery of benefit ultimately and the sustainment and ultimate transition. ट्रांजिशन में आप ऐसी चीज छोड़ के जाएंगे जो चलती हालत में हो और चलती रहे। राइट जी। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं जी। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में ओके, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में वी हैव गॉट 7 टास्क्स। पहला टास्क जो है वो है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग स्पॉन्सर्स एंड क्रिएट द स्टेक होल्डर मैट्रिक्स इन ऑर्डर टू डॉक्यूमेंट देयर पोजीशन रिलेटिव टू द प्रोग्राम। ये काम हम करते रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर। हम स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करते थे, बल्कि एक नॉलेज एरिया है 5th एडिशन के अंदर जो स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करता है। यहां पर ये नॉलेज एरिया नहीं है, यहां पर ये डोमेन के तौर पे प्रोग्राम में स्टेक होल्डर इज मोर इंपॉर्टेंट, मच मोर इंपॉर्टेंट। देयरफॉर इसको एक नॉलेज एरिया नहीं बल्कि पूरी डोमेन बना दिया गया, और वो जो नॉलेज एरियाज थे उनमें से स्टेक होल्डर को निकाल दिया गया। वहां पे नॉलेज एरिया 9 है अभी, और ये जो 10वां है ये स्टेक होल्डर हैज ग्रोन आउट ऑफ इट एंड दिस इज नाउ अ डोमेन बाय इटसेल्फ, एंड इसके अंदर से 28 सवाल आएंगे आप। 28 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दिस डोमेन। तो आपने देखा कि पहला वाला जो स्टेप था वो स्टेक होल्डर की आइडेंटिफिकेशन थी, और ये वही काम है जो हम स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करते हैं, मगर दिस इज इन रिलेशन विद द प्रोग्राम एंड यू विल गेट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट। 5.1 है जी प्रोग्राम स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन। सिमिलरली इसी स्टेक होल्डर जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है, दे हैव टू बी एनालाइज्ड। आपको याद होगा कि जब हम स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करते थे साथ ही हम उसको एनालाइज भी करते थे, और उसको एनालाइज करने के लिए हम बहुत से टूल्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी चीजें, हम अपना तजर्बा भी इस्तेमाल करते हैं, हिस्टोरिकल एनालिसिस भी करते हैं, इंटरव्यूज, लोगों से बात भी करते हैं, नॉलेज बेस को भी देखते हैं, बहुत सी चीजों को देखते हैं, और उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टेक होल्डर मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके कई तरीके हैं, कई टूल्स हैं, जिन्होंने मैट्रिक्स सा बना लेते हैं। उस मैट्रिक्स के अंदर हम कहते हैं कि जी पावर किसके पास ज्यादा है और वगैरह वगैरह, और उस तरीके के साथ आप डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से स्टेक होल्डर मेरे लिए या मेरे प्रोग्राम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अगेन कवर्ड इन 5.1 प्रोग्राम स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन, और इस बात ये एनालिसिस के 4 क्वेश्चन होंगे। टास्क 3 जो है वो है नेगोशिएट द सपोर्ट ऑफ स्टेक होल्डर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। व्हेन वी से नेगोशिएट द सपोर्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, दैट मींस कि आप स्टेक होल्डर की हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, उसको ऑन बोर्ड ले रहे हैं, उसको अपनी टीम का एक हिस्सा बना रहे हैं, और
उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करते कि भाई वो कोई बाहर का आदमी है, उससे आप बात ही ना करें, ऐसा नहीं करेंगे। You want to always be engaged with the stakeholder, connected with the stakeholder, and you negotiate with the stakeholder what are your needs and expectations. और तुम कब कैसे मानोगे, what is your acceptance criteria, ये जो हम बेनिफिट दे रहे हैं तुम्हारे हिसाब से what do you think कि ये बेनिफिट जो है तुम्हें कैसे सेटिस्फाई करते हैं। सो क्लियर एक्सपेक्टेशंस और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिटरमिन करना होगा, उसके मुताबिक हमें अपने केपीआईज डिटरमिन करने होंगे फॉर द प्रोग्राम बेनिफिट्स इन ऑर्डर टू अचीव एंड मेंटेन देयर अलाइनमेंट टू द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। अब ये जहन में रहे कि हम कहीं एक काम करते हुए उसमें इतने जज्बाती ना हो जाएं कि मेन फोकस अपना खो बैठे। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव इज आवर मेन फोकस विद इन अ प्रोग्राम, और आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है। तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट्स आर विद इन द प्रोग्राम एंड ऑल दीज स्टेक होल्डर्स आई हैव टू इंश्योर कि मेरे प्रोजेक्ट जो हैं वो प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। तो ऐसे केपीआईज आइडेंटिफाई करूं जिसमें स्टेक होल्डर की तसल्ली हो। ये जनाब 5.3 है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, अगेन 4 क्वेश्चंस। फिर जनरेट एंड मेंटेन विजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम एंड कंफर्म स्टेक होल्डर सपोर्ट इन ऑर्डर टू अचीव द प्रोग्राम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। पहले तो आपने स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई किया और उसे नेगोशिएट किया, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर। नाउ इज द टाइम दैट यू further engage the stakeholder by making the whole process of program management अंदर जो कुछ भी हो रहा है transparent to the stakeholder. You keep telling him whatever is happening in the program, that will give him confidence, he will be able to own the program. मगर एक बात का ख्याल रखा जाता है कि जिस स्टेक होल्डर को जितनी बात बताना जरूरी है उतनी बात बताई जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बात छुपाई जाए, मैं ये कह रहा हूं कि अननेसेसरीली ज्यादा डाटा उसको लोड ना करें, क्योंकि जो चीज उसको चाहिए नहीं वो मिसयूज हो सकती है। जो चीज उसको चाहिए, जो आप उसकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को जानते हैं, तो जो चीज उसको चाहिए वो उसको दें। मिसाल के तौर पे मैं अपने प्रोग्राम के लिए एक बैंक से फंडिंग लेता हूं। अब बैंक मैनेजर बिकम्स माय स्टेक होल्डर, नेचुरली उसने पैसा लगाया हुआ है और उसका इंटरेस्ट है मेरे प्रोजेक्ट में, ही बिकम्स माय स्टेक होल्डर। मगर और वो पावर भी बड़ी रखता है, वो चाहे तो मेरे पैसे रोक ले। लेकिन एट द सेम टाइम दिस बैंक मैनेजर डज नॉट नीड टू नो कि मैं प्रोजेक्ट कर कैसे रहा हूं, प्रोग्राम के अंदर क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, एग्जैक्टली तमाम डिटेल्स उसको बताने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा नहीं जी मैं तो बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है तो मैं तो हर चीज बताऊंगा, तो पता चले कि मैं रोज शाम को उस बैंक मैनेजर को फोन करता हूं कि सर हमने दीवार बना ली है, दीवार पे इतना सीमेंट लग गया था, 3 आदमी बीमार हो गए थे। नो, दिस न्यूज इज ऑफ एब्सोल्युटली नो यूज फॉर हिम। ये उसको बल्कि एनॉय करेगी। तो हम सिर्फ उसको जो चाहिए हम उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ही इज ओनली इंटरेस्टेड टू नो कि आप उसका कर्जा कब वापस कर रहे हैं भाई। अगर आप उसे ये यकीन दहानी कराते रहें कि जनाब इस महीने की इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी है, अगले महीने की वक्त पे पे हो जाएगी, इसको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उसको आप एक हर महीने एक रिपोर्ट सबमिट करें कि जनाब लोन का स्टेटस क्या है, हम कितना पे कर चुके हैं, कितना रह गया है और हमारा पैटर्न क्या होगा, और अगर कोई मसले मसाइल इस हवाले से हैं तो वो उसके साथ डिस्कस करें। फजूल में अपना जो इंटरनल वर्क है वो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग फिर इतने माइजर होते हैं कि वो अननेसेसरी डिटेल जो आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। अव्वल उन्हें वो चाहिए होती नहीं है, उनके काम की वो इंफॉर्मेशन होती नहीं है, और वो उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर कुछ निफेरियस एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं। वो हम नहीं चाह रहे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं इस बात के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं कि हम कोई चीज किसी से छुपाएं। मगर मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ उतना बताएं जितना
उसको जानना जरूरी है। छुपाने के लिए ना छुपाएं, बल्कि उसको उसकी तकलीफ से बचाएं, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन से बचाएं। अगला ये टास्क जनाब स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में ही आता है। इसके मजीद 4 सवाल बनते हैं। और टास्क 5 इज डिफाइन एंड मेंटेन द कम्युनिकेशंस एडॉप्टेड to different stakeholders, including sponsors, in order to ensure their support for the program. ये जनाब ताल्लुक है जो मेरा और मेरे स्टेक होल्डर के दरमियान है, और ये ताल्लुक है कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर मैं कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं करूंगा, अगर मैंने सही कनेक्शंस एस्टेब्लिश नहीं किए हुए, चैनल्स नहीं बनाए हुए, और स्टेक होल्डर के साथ मैं बात नहीं करता, तो भले मैं कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर लूं, स्टेक होल्डर मुझसे नाराज हो जाएगा। और बजाय इसके कि वो मेरे काम को एडवोकेट करे और उसको ओन करे, वो मुखालफत पे उतर आएगा और मेरे लिए हार्मफुल भी साबित हो सकता है। तो स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट प्लानिंग जब मैं करता हूं, उस वक्त मैं इस बात का ख्याल रखता हूं कि कब कब क्या चीज कैसे कम्युनिकेट होनी है और किस किस के साथ होनी है। यहाँ पे ये चीज कवर हो जाती है, और इसके जनाब 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आपका टास्क नंबर 6 है। क्या हो गया? टास्क नंबर 6 है जी, एवेलुएट रिस्क्स आइडेंटिफाइड बाय स्टेक होल्डर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि व्हेन वी आर टॉकिंग टू स्टेक होल्डर्स, तो हम स्टेक होल्डर से सवाल जवाब भी तो कर रहे हैं ना, बातें भी तो कर रहे हैं ना, तो मुसलसल हम उन्हें कनेक्शन में भी रखा हुआ है। सो प्रोग्राम लेवल के रिस्क मैं उससे डिस्कस भी करूंगा एंड इनकॉर्पोरेट देम इन द प्रोग्राम रिस्क मैनेजमेंट प्लान। तो जैसे मैंने कहा कि आई विल ट्रीट हिम एज अ पार्ट ऑफ माय टीम, और वो मेरी टीम का हिस्सा बन के मेरे साथ काम करेगा। तो मजे की बात है कि इस तरह वो ओन भी करेगा ना, और वो पार्टिसिपेट भी करेगा। वो आपको रिस्क बताएगा जी, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और वो जो रिस्क हैं वो आप अपने रजिस्टर में लिख लें और उनको इनकॉर्पोरेट कर लें। इसी तरह 7वां टास्क है, डेवलप एंड फॉस्टर रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग स्पॉन्सर्स इन ऑर्डर टू इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड एनहांस देयर सपोर्ट फॉर द प्रोग्राम। मुझे ये बंदा अपनी साइड पे चाहिए, ये मुझे अपनी मुखालफत में नहीं चाहिए। तो मुझे इससे कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, इससे बेटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने हैं, और तभी मेरे प्रोग्राम के लिए ये अलमबरदार बन के सामने आएगा। अगर कोई बात करेगा मेरे प्रोग्राम के हवाले से, तो ये फौरन खड़ा हो जाएगा कि जी मेरा प्रोग्राम है, ये आप गलत कह रहे हैं, इसमें कोई इस किस्म का काम नहीं हो रहा, ये तो इस काम मकसद के लिए बनाया गया। क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसको आपने ट्रांसपेरेंटली इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है, तो वो उसको अपने प्रोजेक्ट के तौर पर ट्रीट करेगा और आपको डिफेंड करेगा, उसकी सपोर्ट आपके साथ होगी। इस हवाले से जो अदर नॉलेज हमें चाहिए इस डोमेन के हवाले से, उसमें कस्टमर रिलेशनशिप की मैनेजमेंट है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजरमेंट है। ये करते हैं हम, मतलब आम लाइफ में ऑपरेशंस के अंदर भी ये चीजें करते हैं, और अगर नहीं कर आपको इनका मतलब पता, तो इसके ऊपर मजीद समझने और रीड करने की जरूरत है। एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना एक पूरी साइंस है, इसको समझना है। पब्लिक रिलेशंस कैसे मेंटेन करने हैं, ट्रेनिंग लोगों को अगर देनी है तो उसकी क्या मेथोडोलॉजीज हो सकती हैं, किस किस तरीके के साथ ट्रेनिंग दी जा सकती है। मिसाल के तौर पे अब ट्रेनिंग का कोई एक तरीका तो नहीं है कि क्लासरूम में होनी है। अब हम देखें क्लासरूम में तो नहीं बैठे हुए, सो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग इट एंड वी आर अडॉप्टिंग वन ऑफ इट। मे बी इट हैज इट्स ओन फ्लॉज, बट एट द सेम टाइम वी हैव ब्रिज सो मच ऑफ गैप। एक बंदा डेनमार्क में बैठा हुआ है, कनाडा में बैठा हुआ है, सऊदीया में बैठा हुआ, तो मतलब ये है कि हमें तमाम मेथोडोलॉजीज को मद्देनजर रखना होगा स्टेक होल्डर को एंगेज करने के लिए। फिर जनाब ये वही जो डायग्राम्स थे उसके, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग स्पॉन्सर्स, क्रिएट स्टेक होल्डर मैट्रिक्स इन ऑर्डर टू डॉक्यूमेंट देयर पोजीशन रिलेटिव टू द प्रोग्राम। मैं ये कहूंगा कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं या ये वाली जो स्लाइडें हैं, ये आप अपनी तसल्ली के साथ इसको देखें और पढ़ें। और बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द स्टैंडर्ड, ये टास्क आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैं आपको बताऊं, सारा सिलेबस तो यही है, और अगर ये वाले कॉन्सेप्ट आपको पहले ही इतनी सी चीज पढ़ के ही किसी हद तक भी क्लियर हो जाए, तो किताब जब पढ़नी शुरू करेंगे, स्टैंडर्ड जब पढ़ना शुरू करेंगे, तो थिंग्स विल बी
much more easier to grasp, and then you will be able to underline those points which you did not understand or which need clarification, and ultimately you will work only on that. तो आपका वक्त भी बचेगा लेकिन फिर भी मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी कोई स्टैंडर्ड या कोई किताब आप पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर चीज समझ आ जाए, उसको पढ़ने के ऊपर जोर रखें। एक दफा किताब का खत्म होना जरूरी है ताकि आपके दिल को यह तसल्ली हो जाए कि यार ये तो डुएबल वर्क है, ये तो मैं समझता था ये किताब पढ़ी नहीं जा सकती, ये तो मैंने खत्म कर ली है। अब जब आपने एक दफा पढ़ लिया है तो भले आप माने या ना माने, लेकिन आपके दिमाग ने उसमें से कुछ ना कुछ रिटेन जरूर किया है, भले आपने उसको समझ के नहीं पढ़ा, फिर भी कुछ ना कुछ दिमाग ने रिटेन जरूर किया है। अगली दफा जब आप इस किताब से गुजरेंगे तो आपकी नजरें खुद ब खुद उन पॉइंट्स की तरफ उठेंगी जो शायद आपको समझ नहीं आए, और आप उनको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर यहां से भी समझ ना आए तो फिर आप अदर सोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, किताबें देख सकते हैं, ग्लॉसरीज, इंसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया, ऑनलाइन सर्च करके आप, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि कोई टर्म दुनिया में ऐसी नहीं है जो आपको इंटरनेट पे कहीं ना कहीं एक्सप्लेन हुई ना मिले। तो तैयारी तो हमने थोरो करनी है, तो उसमें वी कांट टेक चांसेस। तो उस हवाले से ये जरा इसके ऊपर इंपॉर्टेंस देनी है कि ये जो पॉइंट्स हैं दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको पूरी तरह से ग्रैस्प करना है हमने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द गवर्नेंस मैनेजमेंट। इसके अंदर 14% सवाल है, मतलब तकरीबन 25 सवाल हैं 11 टास्क के अंदर। इनको देखिएगा, याद रखें गवर्नेंस क्या है। देखें, एक तो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में क्या होता है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है, पुराने प्रोजेक्ट की फाइलें होती हैं, पॉलिसीज प्रोसीजर्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्टैंडर्ड्स होती हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं, टेम्पलेट्स होती हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, इसके अलावा मेथडोलॉजीज होती हैं, मॉडल्स होते हैं। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे चीजें हैं, मगर ये जेनेरिक चीजें, दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि दीज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स आर स्पेसिफिक टू माय ऑर्गेनाइजेशन। जनरली शायद हम लोग 10 टूल्स की बात करते हैं, इन्हीं कामों को करने के लिए दुनिया में शायद 100 टूल अवेलेबल हों, लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पॉलिसी में ये लिख दिया है कि हम अपने काम के लिए यही 10 टूल इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में पड़ी हुई है। बट ये जो कोई भी पॉलिसी है, दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू माय प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। सो देयरफॉर व्हेन अ प्रोग्राम इज चार्टर्ड, behind every program there is a program governance board, and that governance board is responsible to provide you the guidelines, earmark the specific policies and procedures which are to be used for this specific project, and they also formulate a mechanism how will they judge your work. They will identify some kind of key performance indicators, because the people sitting in the board are not capable of micromanaging, and they should not. They should be able to see how well the job is going on by observing certain factors, rather than एक एक चीज का हिसाब किताब खुद रखना शुरू कर दें। भाई, एक एक चीज का हिसाब किताब रखने के लिए प्रोग्राम मैनेजर एग्जिस्ट करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो रिपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन क्या गवर्नेंस में बैठा हुआ बंदा या स्पॉन्सर सिर्फ इन रिपोर्टों पे तकिया कर सकता है? अगर प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसको एक और भी जरिया चाहिए। वो ये देखेगा कि मैंने जो गवर्नेंस मैकेनिज्म इन लोगों को दिया था, कि क्या आया कि ये उस गवर्नेंस मैकेनिज्म के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को चेक करेगा कि किसी ना किसी केपीआईज के जरिए। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स मंगा लेते हैं, उनको कहते हैं जी आप हमारे कंसल्टेंट हैं और आप काम को ऑडिट करें, ऑडिट करके हमें रिपोर्ट दें, और उससे वो चेक करते हैं। आपने देखा होगा कि ये
मोस्टली बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट पाकिस्तान में होते हैं, तो ये जो नेस्पाक है ये उसका कंसल्टेंट होता है। ये असल में असिस्टेंस के लिए रखा हुआ है स्पॉन्सर्स ने, कि उनको ये अश्योर हो जाए कि जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो उन्हें कोई किसी किस्म की अश्योरेंस चाहिए होती है, और वो कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स डिवाइस करते हैं जिसके थ्रू वो दूसरी नजर रख सकें। एक तो डायरेक्ट रिपोर्ट है, उसके अलावा एक और नजर रख सकें जो ये जज करे कि ये प्रोग्राम ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा। मिसाल के तौर पे आपने एक फैक्टर रखा था कि द पीपल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट on the program should be happy. If they are not happy, there is something wrong in the program, and that will definitely impact the performance of the program. आपने देखा कितना इनडायरेक्ट वे से मैं इस चीज को, तो अब मैं क्या जज कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं लोग खुश हैं कि नहीं है। मुझे रिपोर्ट आती है जी बड़ा डिससेटिस्फेक्शन पाई जाती है लोगों में, तो मैं समझ जाऊंगा कि प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है जरूर। बस ये चीज जो है गवर्नेंस ने इंश्योर करनी है कि उसको पता चलता रहे, ऐसे मैकेनिज्म डिवाइस करे, ऐसे केपीआईज आइडेंटिफाई करे कि उसको पता चलता रहे कि क्या ठीक हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इसको पढ़ता हूं, डेवलप प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड स्ट्रक्चर, जिसमें गवर्नेंस है, टूल्स हैं, फाइनेंस, रिपोर्टिंग, ये प्रोग्राम लेवल की बातें हैं ना, तो फाइनेंस एंड रिपोर्टिंग वो चीजें आ जाएंगी इसमें। यूजिंग इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स इन ऑर्डर टू ड्राइव एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी अमॉन्ग प्रोजेक्ट्स एंड डिलीवर प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैं ऐसी गाइडलाइन बना के उन्हें दे देता हूं तो हर कोई उसे फॉलो करेगा ना, और जब हर कोई उसे फॉलो करेगा तो वो खुद ब खुद कंसिस्टेंट हो जाएगा। और ये ध्यान में रखिए कि गवर्नेंस मैकेनिज्म की वजह से मैनेजमेंट प्लान बनता है। अगर ये प्रोग्राम गवर्नेंस है तो प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान जब बनाएगा प्रोग्राम मैनेजर, तो वो इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर के एन मुताबिक इसको अबाइड बाय करते हुए बनाएगा। आपको शायद इस बात का अंदाजा हो कि इवन पीएमपीओके के अंदर भी दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट गवर्नेंस भी एक चीज होती है। तो प्रोजेक्ट गवर्नेंस जो है वो प्रोजेक्ट के लिए ईयर मार्क करती है कि भाई इसने क्या क्या करना है और कैसे करना है और कौन से तरीके और असूल इस्तेमाल करने हैं और इसको चेक कैसे करूंगा, तो ये वहां पर भी होता है। लेकिन अभी हम प्रोग्राम लेवल की बात कर रहे हैं, तो वो टूल्स, वो मैकेनिज्म्स, वो गाइडलाइंस जो हैं वो प्रोवाइड करना जरूरी है। और इस चीज को बेहतर समझने के लिए आप 6.2.4 और 6.2.9 को पढ़ेंगे। पहले वाला जो है वो एस्टेब्लिशिंग अ प्रोग्राम गवर्नेंस प्लान की बात करता है कि गवर्नेंस प्लान कैसे बनेगा, और दूसरा प्रोग्राम की क्वालिटी स्टैंडर्ड और प्लानिंग की बात करता है। तो 3 सवाल आपके इन एरियाज से बन जाएंगे। दूसरा टास्क है जी, सिलेक्ट अ गवर्नेंस मॉडल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट कंफर्म्स प्रोग्राम प्रैक्टिसेस विद द ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब देखें ये कितनी मजेदार बात होगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम गवर्नेंस is subservient to the organizational governance, and organizational governance भी किसी चिड़िया का नाम है। इसी तरह प्रोग्राम के नीचे प्रोजेक्ट जब चलेगा तो अबाइड बाय करेगा प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान के साथ, और प्रोग्राम प्रोजेक्ट गवर्नेंस जो होगी वो बुनियादी तौर पर प्रोग्राम मैनेजर की होगी। प्रोग्राम मैनेजर अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को गवर्न करेगा, उनको हिदायत देगा, गवर्नेंस स्ट्रक्चर की हिदायत देगा, और वो लोग अपना अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान उस गवर्नेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाएंगे। आपने देखा ऊपर से ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस है, प्रोग्राम गवर्नेंस है, प्रोजेक्ट गवर्नेंस है, और अगर बीच में पोर्टफोलियो भी एग्जिस्ट करता है तो पोर्टफोलियो की भी गवर्नेंस होती है। तो जनाब, एस्टेब्लिशिंग अ प्रोग्राम गवर्नेंस प्लान 6.2.4 रिलेटेड है इस टास्क के साथ, और इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जनाब जब ये दोनों काम कर लेता है तो ऑब्टेन द ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल थ्रू स्टेज गेट रिव्यू। अब ये स्टेज गेट रिव्यू क्या बला है? कोई मुझे इसमें हेल्प कर सकता है जी? स्टेज गेट क्या होता है? नेक्स्ट स्टेज करना चाहिए या नहीं? क्या हमें जो स्टेज 1 पे अचीव करना चाहते थे वो कर लिया, सो दैट वी कैन प्रोसीड टू।
प्रोजेक्ट्स में होता है, वैसी चीज ये सर? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बात सबको समझ आई ना जो ये कह रहे हैं? जी सर, जी सर, इट्स क्लियर। जी बोलिए। जी सर, इट्स क्लियर। हमारे वाइल्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी यही अप्रोच फॉलो की जाती है प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में कि जैसे आपने इनिशिएशन कंप्लीट की, देन यू हैव टू जो भी उसके आर्टिफैक्ट्स एंड डिलिवरेबल्स हैं, यू रिव्यू दोस विद द स्पॉन्सर, यू गेट द अप्रूवल, देन यू मूव ऑन टू प्लानिंग एंड देन you close out planning and then you move out to execution. So I guess that's what you are referring to, जो different stages होती हैं और जो एक gated approach चली जाती है। स्टेजेस तो अपनी जगह पे ठीक है, स्टेजेस अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये जो बात हम गवर्नेंस की कर रहे हैं ना, ये जरा डिफरेंट है। देखें, जो स्टेजेस चल रही हैं वो तो स्टेजेस चल रही हैं उसके हिसाब से, क्या नाम है, आपके प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से, उसके ऊपर एक ओवरऑल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद हाँ, एक बात आपकी ये बिल्कुल सही है कि जब प्रोजेक्ट में भी जब हमने प्रोजेक्ट की फेजेस बनाई थी तो हर फेज को दूसरी फेज से सर्जिकली अलहदा रखा था। हर फेज को हमने कहा ये बजाते खुद एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और उसके अपने मकासद थे, उसका अपना डिलीवरेबल था। जब वो अचीव हो जाता था तो उस वक्त मैं फैसला करता था अगली फेज करूं या ना करूं। ये मेरा स्टेज गेट है। जब एक फेज से दूसरी फेज में दाखिल होना होता है, जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में दाखिल होना होता है, तो वहां हम रुक के सांस लेते हैं और चेक करते हैं कि आगे मजीद जाने की जरूरत है भी कि नहीं है। हो सकता है कि अभी तक जितना काम किया है वो इतना खराब है कि हमें उम्मीद ही नहीं है कि अगली फेजेस में हम कुछ कर पाएंगे, तो इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स को खत्म भी किया जा सकता है। तो ये स्टेज गेट रिव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव में तो ऐसा है कि वो हर फेज ऑफ द प्रोजेक्ट के हिसाब से चलते हैं। प्रोग्राम में जरा डिफिकल्ट है ये कॉन्सेप्ट। प्रोग्राम में इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हर प्रोजेक्ट का अपना अपना मैकेनिज्म है, और ओवरऑल बेनिफिट्स को किस तरह से उनके गेट्स बनाए जाएं ये समझ नहीं आती। तो उसके लिए इन्होंने इसकी लाइफ साइकिल को ले लिया और उसको इस तरीके के साथ बनाया। अब जैसे आप हर मुल्क की हुकूमत जो होती है वो एक एक मैकेनिज्म बनाया हुआ होता है उन्होंने अपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को ओवरसी करने का। तो वो एक गवर्नेंस मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि अच्छा, जब आप फिजिबिलिटीज वगैरह कंप्लीट कर लेंगे तो आप हमारे पास आएंगे, हम आपको बताएंगे कि ये ठीक है कि नहीं है, आपको हम गो अहेड सिग्नल देंगे, तब आप अगले कामों में दाखिल होइएगा। हो सकता है कि देयर आर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग और अदरवाइज, बट व्हाटएवर। तो इस तरीके के साथ हम इसके अंदर, एक तो होता है प्रोजेक्ट प्रोग्राम के शुरू होने से बहुत पहले एक गेट होता है, एक प्रोग्राम का जब चार्टर बनता है गेट उस वक्त होता है, इसके बाद प्रोग्राम के अंदर कोई गेट नहीं होता, प्रोग्राम के एंड पे गेट होता है। और प्रोग्राम के जब वो कोई डिलीवरेबल निकलता है उस डिलीवरेबल के ऊपर गेट होता है, और डिलीवरेबल के बाद जब बेनिफिट यील्ड होता है उसके ऊपर एक गेट होता है, जब उसको सस्टेन किया है तो उसके ऊपर एक गेट होता है। मतलब मैं जनरली बता रहा हूं कि इस तरह से गेट्स हैं और हर गेट पे रुक के हम फैसला करते हैं कि आगे जाना है कि नहीं जाना, गो नो गो डिसीजन हम लेते हैं। सो इसको हम कहते हैं गेट रिव्यू, और इसके लिए एक बहुत आला तरीका बनाया हुआ है यूके गवर्नमेंट ने, उसको वो कहते हैं गेट रिव्यू, गेटवे रिव्यू प्रोसेस। गेटवे कहते हैं वो इस चीज को, उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। वो कहते हैं जी कि गवर्नमेंट ने अपना ये रूल बना दिया, ये गेटवे प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे ही सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चलेंगे। और जैसे मैंने कहा था ना कि आप कंसल्टेंट रख लेते हैं अपनी एडवाइस के लिए, वो क्या करते हैं, वो कंसल्टेंट्स को सर्टिफाई करते हैं। वो कहते हैं जी गेटवे प्रोसेस में सर्टिफिकेशन करो, और अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें हर वक्त किसी ना किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर हम खुद असाइन करेंगे, तुम उसका गेटवे रिव्यू किया करो। तो वो जो क्या कहते हैं कंसल्टेंट्स हैं, जो क्वालिफाइड कंसल्टेंट हैं, जो सर्टिफाइड कंसल्टेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को इजाजत होती है, उनको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं और वो उनके रिव्यू करते हैं। जैसे नेस्पाक की मैंने आपको एग्जांपल दी। अब हो सकता है नेस्पाक का तरीका इतना अच्छा या वाजे ना हो, लेकिन जो यूके गवर्नमेंट का है वो बड़ा मेच्योर सिस्टम है, और अगर आप चाहें तो उनकी ओजीसी की वेबसाइट गालबन है,
उससे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पूरा गेटवे रिव्यू प्रोसेस। आप बल्कि इसको सर्च भी कर लीजिएगा, यूके गवर्नमेंट का गेटवे रिव्यू प्रोसेस। तो ये जनाब ये वाली बात है कि ऑब्टेन ऑथराइजेशन अप्रूवल्स थ्रू स्टेज गेट, उन स्टेजेस के ऊपर हमें वो अप्रूवल्स और ऑथराइजेशन चाहिए कि आगे जाना है कि नहीं जाना। इसके लिए हम 6.2 पढ़ना पड़ेगा, प्रोग्राम अप्रूवल, एंडोर्समेंट एंड इनिशिएशन, और फेज गेट एंड अदर जो डिसीजन पॉइंट्स हैं उनका रिव्यू कैसे होता है 6.2.11 में दिया हुआ है। इनके ऊपर 2 क्वेश्चन बनेंगे। टास्क 4 जो है दैट इज एवेल्युएट केपीआईज, वही रिस्क फाइनेंशियल, वही इसी किस्म के केपीआईज होंगे ना जो हायर लेवल के ऊपर होंगे। ओवरऑल रिस्क को देख लो, फाइनेंशियल्स को देख लो, ओवर एक्सपेंड तो नहीं हो रहे, कंप्लायंस है कि नहीं है, क्वालिटी ठीक है कि नहीं। लाजमी बात है कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इसको स्पेसिफाई करने की जरूरत है, इसको मेजरेबल बनाने की जरूरत है। इस तरह के केपीआईज होने चाहिए जो मेजरेबल हो, क्लियर हो, इन ऑर्डर टू मॉनिटर बेनिफिट्स थ्रू आउट द प्रोग्राम लाइफ साइकिल, जिनसे हमें पता चलेगा कि प्रोग्राम वाकई बेनिफिट्स दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, या हमें बेकार हम काम करे जा रहे हैं। इसके लिए 8.1.3 को कंसल्ट कीजिए, प्रोग्राम परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, जहां से 2 क्वेश्चन इसके बनते हैं। 5वां जनाब, डेवलप एंड आर यूटिलाइज द प्रोग्राम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहले तो हमने बात की थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसी तरह एक प्रोग्राम मैनेजमेंट का भी इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि अब हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो प्रोग्राम की जरूरत हमें महसूस होगी। पहले हम प्रोजेक्ट की बात करते थे तो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते थे, तो यहाँ हमें एक प्रोग्राम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की भी जरूरत है, और इंटीग्रेट करें डिफरेंट प्रोसेस को एज नीडेड इन ऑर्डर टू मैनेज प्रोग्राम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट स्टेटस टू द स्टेक होल्डर। याद रहे कि मैंने सिर्फ अपने बॉस को नहीं खुश करना, मैंने तमाम स्टेक होल्डर्स को ट्रांसपेरेंटली उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को मेंटेन भी करना है और उनको एंगेज भी रखना है। तो इसका मतलब है कि सारी कहानी मेरी स्टेक होल्डर के गिर्द घूमती है। और 6 में जनाब, रेगुलरली इवेलुएट न्यू एंड एग्जिस्टिंग रिस्क दैट इंपैक्ट द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। अब देखें, अगर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इंपैक्ट हो गया तो आपका गवर्नेंस मैकेनिज्म भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इस बात को मानते हैं ना जी? तो गवर्नेंस मैकेनिज्म को हमने तबाह नहीं होने देना, सॉरी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हमने हिलने नहीं देना, क्योंकि अगर वो हिले तो हमें गवर्नेंस मैकेनिज्म को तब्दील करना पड़ेगा। और नेचुरली चीज है, तब्दील हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि कोई चीज पत्थर पे लगी रहे तो कभी भी तब्दील नहीं हो सकती, तब्दील होगा और हम उसे करेंगे भी। वो चेंज रिक्वेस्ट वाला प्रोसीजर जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता है, उस तरह का प्रोसीजर होता है जिसके तहत हम तब्दीली लेके आते हैं। ये जनाब आपको रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में मिलेगा, 8.7.5 2 क्वेश्चंस। टास्क 7 है एस्टैब्लिश एस्केलेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर रिस्क आर हैंडल्ड एट द अप्रोप्रिएट लेवल। ये बात तो आप लोग जानते हैं ना कि जब एक रिस्क अक्कर हो जाता है तो वो रिस्क नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, इशू बन जाता है। तो जब कोई चीज अक्कर हो जाए और वो इशू जो है वो फिर हैंडल ना हो सही तरह से, तो वो डैमेज कॉज करता है। हमें इशू का एस्केलेशन का प्रॉपर प्रोसेस एग्जिस्ट करना चाहिए। हर किसी को पता होना चाहिए कि मेरी क्या ताकत है और मैं कहां तक इस मसले को सॉल्व कर सकता हूं, और उससे ज्यादा अगर मसला बढ़ जाए तो मुझे किसको रेफर करना है। तो ये है जनाब आपका एस्केलेशन प्रोसेस। अगेन 2 क्वेश्चंस। Develop and or contribute to an information repository containing program related lessons learned processes and documentation contribution in order to support organizational best practices। तो ये जनाब ये तो बड़ी वही बात हो गई कि जहां पे हमारा आर्काइव पड़ा हुआ है, मतलब जहां ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स जो मेंटेन करता है, तो वो ना सिर्फ ये कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन चीजों को करता है, बल्कि वो एग्जिस्टिंग जो पास्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फाइलों को भी करता है, डाटे को भी वो आर्काइव को मास्टर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उनको रेफर करना पड़ेगा, हमें ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी एग्जिस्ट करवानी है, क्रिएट करवानी है, जिसको कोई बैठ के मैनेज करे। और अगर जब कोई की बात आई गई है तो यहाँ पर क्योंकि प्रोग्राम की बात हो रही है, तो यहाँ हम प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस स्टैब्लिश कर सकते हैं जिसकी जिम्मेदारी ये काम हो, और वो कस्टोडियन होता है इस इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी का, और उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज की का कस्टोडियन होता है। Identify and apply lessons learned in order to support and influence existing and future program
ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट। ये जनाब रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग के हवाले से। और इसके दो क्वेश्चन है। मॉनिटर द बिजनेस एनवायरनमेंट, program functionality, requirements and benefit realization in order to ensure the program remains aligned with the strategic objective। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसा ना हो कि काम के बहाव में मैं जज्बाती हो जाऊं और मैं एक ही चीज जो है उसके ऊपर फोकस कर लूं, उसी के ऊपर फिक्सेट हो जाऊं और मैं अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो कहां खो गया मुझे पता ही ना चले। आई हैव टू रिमेन अलाइंड विद माई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो एक आंख इधर है, एक आंख उधर है, और इन दोनों चीजों को अलाइनमेंट में रखना जरूरी है। ये जनाब आपको मॉनिटरिंग प्रोग्राम प्रोग्रेस एंड नीड फॉर चेंज में मिलेगा 6.2.10 में। और टास्क 11 लास्ट टास्क जो हमारा है वो डेवलप एंड सपोर्ट द प्रोग्राम इंटीग्रेशन मैनेजमेंट प्लान इन ऑर्डर टू इंश्योर ऑपरेशन अलाइनमेंट विद द प्रोग्राम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ये कैसे होगी ये अलाइनमेंट? ये ऐसे होगी कि इंटीग्रेशन इज अ सेंट्रल, ये है तो बाकी नॉलेज एरिया की तरह, लेकिन उन सब का बाप है। ये उन सबको जोड़ने का जरिया बनता है और इसी की वजह से हम कोई अकम्पलिशमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली हम प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान भी यहां बनता है इंटीग्रेशन के अंदर। ये जनाब प्रोजेक्ट इनिशिएशन 8.3.1 से आपको मिलेगा और इसके भी दो क्वेश्चन है। जो इसमें अदर नॉलेज एरियाज हैं उसमें आर्काइविंग टूल्स एंड टेक्निक्स हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्लोज आउट प्लान प्रोसीजर्स टेक्निक्स एंड पॉलिसीज हैं, कंपोजिशन एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस, फाइनेंशियल क्लोजर के प्रोसेस, गो नो गो डिसीजन का क्राइटेरिया, गवर्नेंस के मॉडल, गवर्नेंस के प्रोसेस और प्रोसीजर्स, मीट्रिक्स, परफॉर्मेंस एनालिसिस जिसके ईवीए वगैरह जिसमें आ जाते हैं, फेज गेट रिव्यूज, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट चेंज रिक्वेस्ट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये सब चीजें जो हैं आपको गवर्नेंस में जाननी होंगी। ये जनाब उसकी वही जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली जैसे दिखाता रहा हूं, ये वही 11 के 11 टास्क इस तरह से डायग्राम में बने हुए हैं। और इन्हीं को मैं कह रहा हूं कि अगर आपको टेक्स्ट नजर ना भी आए और वो पढ़ा ना भी जाए तो कम से कम ये डायग्राम्स को देख के आपको सारा कुछ मिल जाएगा। जी ये आज मेरा ख्याल है हम यहां पर ही क्लोज करते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए। ठीक है सर। आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे जब हम चलेंगे तो हम ज्यादा डिस्कशन की तरफ आ जाएंगे। अभी जरा थोड़ा चूंकि वो लेक्चर टाइप के सिस्टम चल रहा है और सिर्फ बातें बतानी है तो वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आगे आगे चल के हम चीजों को साथ साथ डिस्कस भी करें। राइट जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। और इंशाल्लाह टुमारो सेम टाइम 3 to 5। खुदा हाफिज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।